Good morning, students. Today we shall do chapter number 3, Drainage System. Chapter number 2 is not in our course. So let us begin. You have observed water flowing through the rivers, nalas, and even channels during the rainy season, which drain the excess water. Had these channels not been there, large-scale flooding would have occurred. Wherever channels are ill-defined or choked, flooding is a common phenomena. So, the chapter begins with just that if there would have been no drains and no nalas, then there would have been flooding. क्योंकि जब बरसात आती है तो इतना पानी एक साथ आता है कि पानी को रास्ता चाहिए बहने के लिए. अगर उसे हम रास्ता नहीं देंगे तो वो बाढ़ के रूप में रिजल्ट होगा उसका फिर. The flow of water through well-defined channels is known as drainage, and the network of such channels is called the drainage system. इन चैनल्स को हम ड्रेनेज कहते हैं और जो पूरा नेटवर्क है इन चैनल्स का उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. The drainage pattern of an area is the outcome of the geological time period, nature and structure of rocks, topography, slope, amount of water flowing, and the periodicity of the flow. तो क्या है जो ड्रेनेज पैटर्न है वो एक एरिया का जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड है वहाँ का क्या नेचर है, क्या स्ट्रक्चर है रॉक्स का, क्या टोपोग्राफी है, वहाँ पे स्लोप है या नहीं और वहाँ पे कितना पानी है, इन सब पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. Do you have a river near your village or city? Have you ever been there for boating or bathing? Is it perennial? कि पेरेनियल जिसमें पूरा साल पानी रहता है और एफिमरल जिसमें सिर्फ रेनी सीजन में पानी रहता है बाकी ड्राई रहती है. Do you know that rivers flow in the same direction? You have studied about slopes in the other two textbooks of geography NCERT. In this class, can you then explain the reason for water flowing from one direction to the other? Why do rivers originating from Himalayas in the northern India and Western Ghat in the southern India flow towards east and discharge their waters in the Bay of Bengal? तो अब ये जो rivers हैं हिमालयाज में नॉर्दर्न इंडिया में और वेस्टर्न घाट्स में सदर्न इंडिया में ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और अपना पूरा पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ती है. क्या रीजन हो सकता है इसका? कैन यू टेल मी? नाउ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स. द ड्रेनेज पैटर्न, just see this block, okay? The drainage pattern resembling the branches of a tree, it is known as dendritic. Examples of which are the rivers of the northern plains. देखो डेंड्राइटिक पैटर्न ये इस तरीके से होता है, ये मैंने बना रखा है यहाँ पे, ट्री की ब्रांचेस की तरह ये जाता है. When the rivers originate from a hill and flow in all the directions, the drainage pattern is known as radial. जब एक ये हिल है तो हिल के ऊपर से जब रिवर्स चारों ओर बहती हैं तो इसको हम कहते हैं रेडियल पैटर्न. The rivers originating from Amarkantak range present a good example of it. Third is when the primary tributaries of rivers flow to each other and secondary tributaries join them at right angles, the pattern is known as trellis. जब पैटर्न इस तरह से चल रहा है, ये ओरिजिनल रिवर जा रही है, ये ट्रिब्यूटरी आके राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है, ये ओरिजिनल रिवर जा रही है, द ट्रिब्यूटरी इज जॉइनिंग एट राइट एंगल. दिस इज नोन एज ट्रेलिस. When the rivers discharging their water from all directions in a lake or depression, the pattern is known as centripetal. जब ये rivers चारों ओर से आ रही है ना, और यहाँ बीच में डिप्रेशन है, तो जब इस डिप्रेशन में ये अपने पानी को छोड़ रही हैं, डिस्चार्ज कर रही हैं, they are coming from all directions, it is known as centripetal. A river drains the water collected from a specific area, which is called its catchment area. तो कैचमेंट एरिया क्या होता है कि वो एरिया रिवर के पास वाला जहां का
पानी सारा बह के उस रिवर को ज्वाइन करता है, तो वो पूरा कैचमेंट एरिया जो वाटर को कैच करके रिवर को प्रोवाइड कर रहा है. एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन क्या हुआ? वो पूरा एरिया जो एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन कर रही है, पानी पहुंचा रही है, दैट इज कॉल्ड अ river basin. The boundary line separating one drainage basin from the other is known as the watershed. तो जो एरिया दो ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करता है उसको हम वाटरशेड कहते हैं. द कैचमेंट्स ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन्स while those of small rivulets and rills are often referred to as watersheds. जो कैचमेंट एरियाज बड़े रिवर्स के होते हैं ना, उनको तो हम रिवर बेसिन्स कहते हैं, और जो छोटी स्मॉल रिवर्स के होते हैं उनको हम वाटरशेड भी कहते हैं. There is, however, a slight difference between a river basin and a watershed. Watersheds, they are smaller in area, while basins cover large areas. तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो वाटरशेड है वो स्मॉल होता है और रिवर बेसिन्स बहुत लार्ज होते हैं. River basins and watersheds are marked by unity. What happens in one part of the basin or watershed directly affects the other parts and the unit as a whole. That is why they are accepted as the most appropriate micro, meso or macro planning regions. तो जो river basins और watersheds है, actually है एक ही चीज, लेकिन watersheds जो हैं वो छोटे होते हैं और रिवर बेसिन्स लार्ज होती हैं. इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस. जो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ वो पानी अपना कहाँ छोड़ रही हैं रिवर्स, उसके बेसिस पे हम इट मे बी ग्रुप्ड इनटू द अरेबियन सी ड्रेनेज एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज. They are separated from each other through the Delhi Ridge. जो Delhi Ridge है उससे ये दोनों separated हैं. Delhi Ridge, Aravali's and Sahyadris. ये तीन जो ranges हैं, Delhi Ridge, Aravali's और Sahyadris, इनसे ये जो drainage system है ये separated है. Nearly 77% of the area consisting of Ganga, Brahmaputra, the Mahanadi, the Krishna, etc. is oriented towards the Bay of Bengal, while 23% comprising the Indus, the Narmada, the Tapi, Mahi and the Periyar systems discharge their waters in the Arabian Sea. तो बे ऑफ बंगाल में 77% वाटर इंडिया का फ्लो कर रहा है और अरेबियन सी में ओनली 23%. सारी जो बड़ी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सब अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं बे ऑफ बंगाल में, और जबकि ये नर्मदा, इंडस, तापी, माही, परियार, इन सब का जा रहा है अरेबियन सी में. तो ये तो हुआ जो हम वाटर कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है उसके बेसिस पे हमने इसको रिवर्स को दो ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, अरेबियन सी ड्रेनेज एंड द बे ऑफ बंगाल. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द वाटरशेड, द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज. वाटरशेड के साइज के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में इंडियन रिवर्स को डिवाइड करा है. Major river basins with more than 20,000 square kilometer of catchment area. It includes 14 drainage basins such as Ganga, Brahmaputra, Krishna, Tapi, Narmada, Mahi, Penar, the Sabarmati, the Barak, etc. Medium river basins with catchment area between 2,000 to 20,000 square kilometers, incorporating 44 river basins such as Kalindi, the Periyar, the Meghna, etc. And third is minor river basins with catchment area of less than 2,000 square kilometers, include fairly good number of rivers flowing in the area of low rainfall. तो
कैचमेंट एरिया के बेसिस पे हमने वाटरशेड के साइज के बेसिस पे इन रिवर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज मेजर रिवर बेसिन्स, सेकंड इज मीडियम रिवर बेसिन्स एंड थर्ड इज माइनर रिवर बेसिन्स. माइनर रिवर बेसिन्स में छोटी मोटी रिवर्स हैं जिनका कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स है. मीडियम रिवर बेसिन्स में जिनका कैचमेंट एरिया 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और मेजर रिवर बेसिन्स में जिनमें कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है. तो समझ में आया ये. ऑन द बेसिस ऑफ पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड. हमने रिवर्स को इन ग्रुप्स में डिवाइड करा है. Now, if you look at the figure 3.1, you can see that many rivers have their sources in the Himalayas and discharge their water either in the Bay of Bengal or in the Arabian Sea. Identify these rivers of North India. Large rivers flowing on the peninsular plateau have their origin in the Western Ghats and discharge their waters in the Bay of Bengal. Identify these rivers of South India. The Narda and Tapi are the two large rivers which are exceptions. They, along with many small rivers, discharge their waters in the Arabian Sea. Now, on the basis of mode of origin, कि कहाँ से rivers originate हो रही है, their nature and characteristics, the Indian drainage may also be classified into the Himalayan drainage and the peninsular drainage. तो 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया इंडियन ड्रेनेज को. फर्स्ट तो था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ वाटरशेड एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन. उसमें हमने रिवर्स को 2 में क्लासिफाई किया है, हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज. Although it has the problem of including the Chambal, the Betwa, the Sun, etc., which are much older in age and origin than other rivers that have their origin in the Himalayas. It is the most accepted basis of classification. Hence, this scheme has been followed in this book. Actually, ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका है इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, तो इसी बेसिस को ज्यादा डिस्कस किया जाता है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स.